Okay, we are live. Hello, good afternoon. Welcome back to the Law Entrance YouTube channel. We are back with another session. We all know today is Tuesday, and Tuesday ko hum karte hain Menti quiz. How many of you are here with me today? Can I have some responses in the chat box if you guys have joined? Can I see some names? I can see Kashish, I can see Satviki. Good afternoon, guys. Who all are here? Riddhi is here. Okay. Mishika is here. Good afternoon. ठीक है, we'll wait for a few more seconds. Let more people join us. Then चार्जर लगा लेते हैं. Okay. Prerna is here after a long time. Welcome back. Prapti is here. Adrija is here. Good afternoon. Very good afternoon, guys. I hope सबकी तैयारी बढ़िया चल रही है. I hope कल लास्ट लैब वाला सेशन आपके लिए बेनिफिशियल था. आज भी लास्ट लैब का नेक्स्ट सेशन है, which is by Swasni ma'am. It is a session on legal. Prerna, I'm good. Thank you for asking. Mishika is asking, किसी ने स्लैट का मॉक दिया क्या? बता दो भाई जिसने दिया हो. सोनल इज हियर. गुड आफ्टरनून. वेरी गुड आफ्टरनून, गाइस. चलो, आज मेंटी क्विज करने वाले. आई होप ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेंटी क्विज. वी गो टू www.menti.com and then we have a short MCQ based quiz. But उससे पहले, do you guys want me to give you a newspaper overview of today's newspaper? Do you want a very brief discussion about the important topics in today's newspaper? Can I get a yes or no in the chat box? We'll proceed accordingly. If you guys want to do it tomorrow, then we can do it tomorrow as well. Prerna is saying 3 p.m. मैं मॉक देते रहती हूँ इसलिए यहाँ नहीं आ पाती. कोई बात नहीं. I hope you watch it later. That's all right. ठीक है. Newspaper analysis करना है. चलो ठीक है, कर लेते हैं. I'll quickly share the newspaper with you guys. Just give me one moment. Okay. आज का न्यूज़पेपर कर देते हैं शेयर. All right. So yeah, this is the newspaper. डिटेल्ड एनालिसिस आज नहीं करेंगे क्योंकि आज एक्सक्लूसिव मेंटी क्विज है. बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा कौन से हैं, थोड़ा सा ब्रीफली उनके बारे में बता दूंगा, एंड देन जो भी इंपॉर्टेंट हमें ज्यादा लगेगा वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन टुमारोज एनालिसिस. ठीक है, चलो लेट्स सी. These are ads. Then we have 10 armed militants killed by CRPF in Manipur clash. Okay. The UN raises alarm as climate talks begin in Azerbaijan. Which summit is happening in Azerbaijan? What is this climate talk related summit? Can you guys tell me in the chat box very quickly? अब तक तो सबको फिंगर टिप्स पे बताना चाहिए. Which summit are we talking about? And Azerbaijan में कहाँ पे हो रही है वो? Azerbaijan की कैपिटल बाकू में हो रही है. Recently, because Trump has been elected, उस वजह से काफी ज्यादा concerns हैं regarding climate change, because we all know that he had opted out of the Paris Agreement. आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है. डूसू पोल्स. डूसू इज दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन. ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे. No religion encourages polluting activities, Supreme Court ने बोला है on bursting firecrackers. This is in context of them putting a year-wide ban on firecrackers, because they say that it affects the fundamental right of health, which is available to all the citizens. तो देखते हैं इस पे क्या डिसीजन आता है फाइनली. प्रोटेस्ट चल रहा है by UP PSC aspirants. Okay, not important. High Court says murder trial. This is also not important. Okay, let's see if we have any important state news. No. Nothing here. Nothing of importance for you guys in this state-based, election-based news. Kerala government plans to meet up. Not important. This is also not important. ये अच्छा आर्टिकल है. The LAC agreement, the detentees and the questions. So recently, disengagement has been completed. That is, de-escalation process on the LAC in the Debchok and Dipsang plains has been completed by both the Indian and the Chinese army. और उसमें जो भी नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो लिए जाएंगे टू ड्रॉ द फाइनल लाइन की कहाँ तक जो है टेरिटरी है दोनों की, एंड उसमें क्या क्या नुआंसेस हैं वो ये आर्टिकल डिस्कस करता है.
what are the theories on why Chinese do such things, what is their expansionist model, how conflicts are also going in Arunachal Pradesh, how Chinese usually do such skirmishes along the border. मैं पढ़ रहा था इसमें आर्टिकल में, आई थिंक लिखा था कि 300 समथिंग इन्फिल्ट्रेशंस होते हैं बाय द चाइनीज अक्रॉस द LAC इन अ गिवन ईयर। और जिस ईयर में वो वाला आपका हुआ था गलवान वैली वाला क्लैश, उस साल 400 प्लस इन्फिल्ट्रेशंस हुए थे। तो वही सारी चीजें ये बताता है कि देयर इज नो टेम्पलेट और क्लैरिटी एज टू हाउ विल बी स्टॉपिंग दैट। And then she goes on to tell you the theories on Chinese actions and how and why they do this. And then, of course, there is some link with the DBO road. What is the DBO road? It's called the Daulat Beg Oldie Road. वो एक road है which connects POK to Aksai Chin, and वहाँ पे लद्दाख के region में ये एक road है. So it basically is a highway which in which Pakistan and China wants to establish connectivity, and India का वहाँ पे काफी ज्यादा concern रहता है। उसके बाद हमारा आर्टिकल है गिविंग शेप टू इंडियाज कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म। दिस इज अगेन इन लाइट विद द COP29 समिट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज समिट। एंड इंडिया का कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म कैसे वर्क करना चाहिए, बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन एंड एज अपोज टू डेवलप्ड नेशंस वी शुड have lesser responsibility with regards to the carbon credit mechanism, and developed countries should assume more responsibility. Carbon credits आप लोगों को पता है ना, when you do अपने required emission से थोड़ा कम emission तो आपको carbon credits मिलते हैं, आप ज़्यादा करते हो तो आपको carbon credits खरीदने पड़ते हैं दूसरी countries से जिनके पास ज़्यादा carbon credits हैं। That is how an international framework on carbon credits works. एंड इंडिया कैसे अपना शेप करेगा उसके अराउंड ये आर्टिकल है, इसको हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली कल के हिंदू एनालिसिस में। आई वांट टू डिस्कस बोथ ऑफ दीज आर्टिकल्स, एंड आगे चल के अभी एक AMU पे भी डिटेल्ड आर्टिकल है, AMU वाली जो माइनॉरिटी स्टेटस वाली कंट्रोवर्सी चल रही है उसको भी हम डिस्कस करेंगे कल। तो 2-3 चीजें हैं आज के न्यूज़पेपर में जो डिस्कस करने लायक हैं। एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिजन्स, दिस इज ऑल्सो इन लाइन टू अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुकन्या शांता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके एक जजमेंट आया है which is regarding non-discrimination of prisoners in India. But आप लोगों के लिए इतना नीश टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। बेसिकली यही है कि प्रिजनर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन एनी क्राइटेरिया, बी इट जेंडर, बी इट कास्ट, बी इट सोशल बैकग्राउंड, व्हाटएवर। ठीक है, देन व्हाट डू वी हैव, जर्मनी ओपन्स डोर्स टू स्किल्ड इंडियंस अमिड ग्लोबल वीजा कट्स। ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये। कैन AMU फाइनली क्लेम अ माइनॉरिटी स्टेटस। तो बहुत ब्रीफली बता देता हूँ मैं ये इशू क्या है। ये इशू फर्स्टली आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 30 कंसर्न्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजियस एंड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस एंड हाउ रिलीजियस माइनॉरिटीज कैन मैनेज एंड रन देयर ओन इंस्टीट्यूशंस। ये मैंने अभी रिसेंटली एक मेंटी में भी पूछा था आप लोगों से। तो ये कहानी, ये कंट्रोवर्सी जाती है, गोज बैक टू 1967। वहाँ का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का विच इज कॉल्ड द अजीज बाशा जजमेंट। अजीज बाशा जजमेंट ने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि AMU क्योंकि एक माइनॉरिटी स्टेट इंस्टीट्यूशन की तरह नहीं एस्टैब्लिश हुआ, एक एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश हुआ है, तो इसको एक माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जा सकता। तो अब जो है डेलिब्रेशन हुआ एंड सुप्रीम कोर्ट ने 4:3 का वर्डिक्ट दिया है और उन्होंने ओवरटर्न कर दिया है उस डिसीजन को, एंड उन्होंने बोल दिया है कि AMU को अब माइनॉरिटी स्टेटस मिलेगा। ठीक है, इसके पीछे का रैशनल क्या है, इसके पीछे की पूरी बैकग्राउंड क्या है वो हम समझेंगे, बट दिस इज द जिस्ट। ठीक है, 1967 में एक जजमेंट आया था, उसने कहा था माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलेगा क्योंकि एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश हुआ है, लेजिस्लेशन के थ्रू एस्टैब्लिश हुआ है। अभी रिसेंटली 4:3 के जजमेंट से इसको ओवरटर्न कर दिया गया है एंड उन्होंने बोल दिया कि इसको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा। ठीक है, इसमें DYC भी थे आपके और बाकी जजेस के नाम यहाँ लिखे होंगे, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पर्दीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड जस्टिस SC शर्मा। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी 7 जजेस की। ठीक है, तो दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम कल डिस्कस करेंगे। अंडरबेली ऑफ यूरोप्स डिजिटल यूरो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। Then we have on 11 November, Justice Sanjeev Khanna succeeded as 51st Chief Justice. उस पे 4-5 questions हैं quiz के, बढ़िया है। Parties keep up attack as phase 1 Jharkhand campaign concludes. This is again state-based news. Jharkhand elections not important for us.
ट्रायल रिफॉर्म्स प्रमोटिंग मीडिएशन अमंग न्यू चीफ जस्टिस प्रायोरिटीज। सो नए जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने ओथ ले ली है। उनको ओथ कौन दिला रहा है, फोटो में आप देख सकते हो, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी उनको ओथ दिला रही हैं। एंड ही हैज बिकम द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया yesterday। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज वाली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी कल हुई है, ये वाला भी कल हुआ है, 11 नवंबर को दोनों चीजें हुई हैं। अब्दुल्ला आईज रिटर्न ऑफ ट्विन कैपिटल सिस्टम होल्ड्स मीटिंग ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये वही स्टेटहुड की डिमांड चल रही है इनकी, जो हम डिस्कस कर रहे थे कल, कि दे हैव रिसेंटली पास्ड अ रेजोल्यूशन की दे वांट टू रिस्टोर द ओरिजिनल स्टेटस ऑफ आर्टिकल 370 एंड द स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये पर्टिकुलर न्यूज है, देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट होता है। ऑस्ट्रेलिया टुडे क्लैरिफाइज बैन वाज बाय मेटा प्लेटफॉर्म्स नॉट कैनेडियन गवर्नमेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। हेमंत गवर्नमेंट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स लूटिंग मनी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, चलो सही है। Neither here nor there, not important. For farmers, daily pursuit of scarce DAP in sowing season. DAP क्या होता है? डायमोनियम फॉस्फेट। स्कार्स DAP हो गया है सोइंग सीजन में, जिस वजह से दिक्कतें हो रही हैं। बेसिकली फर्टिलाइजर शॉर्टेज की बात हो रही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, एंड उस वजह से द क्रॉप इज सफरिंग। ठीक है। TRAI चीफ टू चेयर साउथ एशियन टेलीकॉम रेगुलेटरी काउंसिल। ओके, ठीक है। India Bangladesh officials, high prevalence of sexual violence, women naval officers, ये important है, ये वन लाइनर की तरह important है। Women naval officers circumnavigating globe reach Australia in their first stop। ठीक है, तो इन्होंने स्टार्ट करी थी अपनी वॉयज, 39 डेज हो गए हैं। 2 women officers हैं, क्या है उनका नाम? वेसल का नाम पता होना चाहिए आपको, INSV तरिणी, इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तरिणी। एंड इन्होंने स्टार्ट किया था गोवा से। It was flagged by the Navy Chief Admiral दिनेश के त्रिपाठी, एंड दो ऑफिसर्स कौन है? दिलना के एंड रूपा ए। ठीक है, दिलना एंड रूपा, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। INSV तरिणी आपको नाम याद होना चाहिए, एंड मिशन का नाम पता होना चाहिए आपको, परिक्रमा 2। ठीक है, तो अब ये ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गए हैं। ये बेसिक फैक्चुअल आर्टिकल है, पता होना चाहिए आपको। ओके, दिलना एंड रूपा याद रखना आप, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इकोनॉमिक बेस्ड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। देन यहाँ पे भी कुछ नहीं है। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा पैलेस्टीनियन स्टेट इज नॉट रियलिस्टिक। ओके, देन दिस इज द सेम इजराइल पैलेस्टीन गाजा कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन। सऊदी कुवैत में फिल जॉब्स। ट्रम्प नेम्स टॉम होमन बॉर्डर सार। एलिस स्टेफनिक एज एम्बेसडर टू UN। तो ये वन लाइनर के तरीके से इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि टॉम होमन जो बन गए हैं कंट्री के बॉर्डर एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज। सार मतलब लीडर होता है एसेंशियली, रशियन वर्ड है ये। एंड ये जो लेडी हैं एलिस स्टेफनिक, ये बन गई हैं US की एम्बेसडर टू द UN। तो ये दोनों नाम याद रखना, टॉम होमन एंड एलिस स्टेफनिक। ओके, then do we have anything important in sports today? Not really. Okay, so yeah, that's pretty much it about the newspaper overview। 3-4 important editorial articles हैं, उसको मैं कल briefly discuss कर लूंगा आप लोगों के साथ। एक तो AMU वाला judgment, and then we'll be doing एक दो और articles, कौन कौन से? कार्बन क्रेडिट वाला थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एंड LAC एग्रीमेंट वाला थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ब्रीफली इन टुमारोज हिंदू एनालिसिस। विद दैट बीइंग सेड, वी आर डन विद द ओवरव्यू ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर टुडे। अब चलते हैं आज के मेंटी क्विज पे। आई विल क्विकली शेयर इट ऑन द स्क्रीन। अरमान इज सेइंग कैन वी प्लीज कवर इंडियन एक्सप्रेस पेपर एज वेल। कल से कर लेते हैं, कल कर लेंगे। ठीक है, आज पहले मेंटी कर लेते हैं, अगर उसके बाद वी हैव टाइम देन वील डू इट। अरमान इज सेइंग इज द AMU एक्ट इंपॉर्टेंट? देन हाँ, बेसिक फैक्ट्स उसके अराउंड इंपॉर्टेंट है, मैं कल आपको सारे कवर करा दूंगा। AMU रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है कल कवर कर लेंगे। ठीक है। और सर तनवीर सेइंग डू यू थिंक JNK शुड गेट स्टेटहुड? मेरे सोचने ना सोचने से फर्क नहीं पड़ता, बट देयर आर लॉट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स रिलेटेड टू इट, टू बी ऑनेस्ट। एंड अभी क्योंकि JNK इज इन अ अनस्टेबल सिचुएशन, तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम उसको सेंटर के कंट्रोल में रहना चाहिए, बिकॉज सेंटर वुड हैव बेटर कंट्रोल एंड अथॉरिटी ओवर कर्बिंग द टेररिज्म एंड इन्फिल्ट्रेशन व्हिच इज रिसेंटली हैपनिंग। टेररिस्ट अटैक बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो उस वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव रीजन, नथिंग पॉलिटिकल है।
बट देर आर लॉट ऑफ नुआंसेस टू इट. ठीक है, मेंटी कोड दे रहा हूं मैं आप लोगों को. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. 54902092 is the Menti code. 54902092 is the code for today's Menti. एंड आज का मेंटी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है. थोड़ा छोटा है आज का मेंटी. इट्स आई थिंक 16-17 क्वेश्चंस टुडे. 17-18 ऐसी क्वेश्चंस है. बट इट्स काफी इंटरेस्टिंग. थोड़ा सा स्टैटिक है, थोड़ा सा लीगल जीके है, थोड़ा सा करंट अफेयर्स है, प्राइमरली फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर. ठीक है, क्योंकि नवंबर में अभी इतना ज्यादा हमारे पास मटेरियल है नहीं. सो अक्टूबर से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा हैं. एक आध हो सकता है नवंबर का भी हो. बट या दैट इज द कोड. आई विल पुट इट ऑन द स्क्रीन एज वेल. 54902092. ओके, अरमान का मैसेज कर दिया मैंने हाईलाइट. मेरा मैसेज करना था. या ठीक है, तो you guys can quickly go on to www.menti.com and join the quiz. We'll start in 60 seconds. I'm waiting for all of you to join very quickly. For people who are new to the process, I'll reiterate it. You need to go to www.menti.com, put in this 8-digit code, and you would get access to our Menti quiz. And we'll be beginning it very shortly. You would have 4 options. One of them would be correct. There's no negative marking here. You have to answer as quickly as possible. I'll share it on my screen as well. Just give me a moment. All right, let's start. So, welcome back to another Menti quiz on the month of October and November. Let's see the instructions. The instructions are simple. Please answer all the questions and answer them as quickly as possible. Please read the questions carefully. There might be a few tricky questions today, so I'm warning you initially. बाद में मत कहना misclick हो गया, misjudge हो गया, question पढ़ा नहीं. I'm giving you the spoiler beforehand that there are a couple of tricky questions in today's quiz. So play attentively and let's see how many people do we have for today's quiz. We have 23, 24. Okay, 24. I'll start when we have 26 players. Can we do 26 players? I'm giving you guys 10 to 15 seconds to put in your respective names. Please come through your real names if possible. Don't try to be anonymous. You should get credit if you're performing well. 26 players तो हो गए हैं, क्या बात है. चलो, I'll start in just 10 more seconds. You guys can enter your names, your real names. Okay, we have 27 players. Lovely. I'll start in 5 seconds. Please put in your names very quickly. We'll just begin in 5, 4, 3, 2, 1. And let's go to the first question. The first question is coming up for you all in 3, 2, 1. Excuse me. 16 people got this right. The right answer is Devika Rani. Devika Rani was the first recipient of the Dadasaheb Phalke Award, and recently, during the 70th National Awards, the 54th Dadasaheb Phalke Award was awarded to Mithun Chakrabarti. Okay? 54th Dadasaheb Phalke Award, Mithun Chakrabarti. First was Devika Rani, and 70th National Awards. So these are the figures you need to remember. Let's see who are our leaderboard toppers. रिद्धि, तन्वी, सोनल, शिवेन, ज़्लाटन. क्लैट कंसोर्शियम भी खेल रहा है हमारे साथ. वाओ, लवली. तनुश्री, देवांशी, मुक्ति एंड आलिया are the people with 900 plus points and the top 10, very close top 10 on the leaderboard. The second question, 26 players are ready with me. Let's go for it. Come on, guys. Oh, काफी तुक्केबाजी हुई है इस क्वेश्चन में. The right answer is 2009 to 2014, where he served as the CM of the state of Jammu and Kashmir. Back then it was the state. अभी तो यूनियन टेरिटरी हैं, फिर से वो CM बन गए हैं.
और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर आपको मैं बताऊं तो ही वाज द यंगेस्ट सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हेन ही जॉइंड इन 2009. ही वाज आई थिंक 38 इयर्स ओल्ड. उनके फादर भी जम्मू एंड कश्मीर के सीएम रह चुके हैं, फारूक अब्दुल्ला, एंड उनके ग्रैंडफादर भी जम्मू एंड कश्मीर के सीएम रह चुके हैं. वो भी कोई अब्दुल्ला है, मैं उनका फर्स्ट नेम भूल गया. बट हाँ, ही इज द थर्ड जनरेशन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो या 2009 टू 2014, बिकॉज बहुत टाइम बाद एक सीएम है जेएंडके के पास, so this becomes important. Tanvi with the fastest response has claimed the first spot. Lovely. Then we have Shivain, Riddhi's Latin, Sonal, Devanshi, Kuku, and Sharvi, and CLAT Consortium and Tanushri. All right. Question number 3 for 26, 27 players now. Coming up for you in 3, 2, 1. This is discussed in the class, so should not be wrong. Also, do a little bit of smart work in this question, would make things easier. I think most of you did that. Welthunger is the German aid agency, and Concern Worldwide is an Irish organization, and India was ranked 105th in the Global Hunger Index. We discussed this in the class, so good job. I'm glad that majority of you got this right. He was the fastest and has made it to the leaderboard. Tanvi is still maintaining the spot. The top three are still there. Then we have Devanshi, Kuku, Mukti, Alia, Rashi, Zlatan, and Sonal. Good to see new names on the leaderboard. 28 people have joined now. Lovely. Let's go to question number 4 in 3, 2, 1. Okay, majority of you got this right. It's Odia, which got the status in 2014 and not October 2024. Marathi, Pali, and Prakrit received the status in October 2024 along with two other languages. So, yeah, this was a question which you had to read carefully in order to get to the right answer. Oh, I think Riddhi did not read the question carefully or probably misclicked. ठीक है, Tanvi was the fastest. Then we have Shivain, Devanshi, Mukti, Rashi's Latin, Consortium, Mishika, Riddhi, and Homer. I can see new names on the leaderboard, which is fantastic. 28 players, 29 players for the fifth question. Let's go for it in 3, 2, 1. Let's go. ये भी क्लास में डिस्कस हो चुका है. The correct answer is a protozoa called Leishmania donovani, and the carrier is the sandfly. Sandfly के through ये spread होता है. It is a protozoan called Leishmania donovani, and Kala Azar is also called Leishmaniasis. And we have discussed this in class. It's not a bacteria, not a virus, not a fungus. Okay. I can again see new names on the leaderboard. Kuku had the fastest response. Tanvi and Shivain still maintaining their first and second spots. Wonderful. Then we have Devanshi, Mukti, Mishika, Kuku with the fastest response. Rashi's Latin, Consortium, and Namra. All right, let's go to the sixth question. 30 players हो गए. क्या बात है? आज तो lovely participation today. Let's go for the question in 3, 2, 1. Simple, direct question. Nothing complicated here. Prabowo Subianto is the correct answer. Absolutely correct. Simple question, easy question था ये तो. पढ़ा होगा तो आता होगा. There's no room for guesswork here. Oh, okay, I can again see new names. Hola Hope
is now on the leaderboard. Tanvi with the fastest response has taken a slight lead. Then we have Shiven, Devanshi, Mukti, Kukus, Latin, Mishika, Homer, Sonal, and Hola Hop. All right, let's go for question number 7. 29 players are playing with us for the next question coming up now. First typhoid vaccine of India recently approved by WHO. 9 people got this right. It's Zyvac TCV. It's not Typhofide, not TCV Typho, not TCVac. It's Zyvac TCV. Chalo, sahi hai. Let's see who all knew this. Not a lot of you. Okay. Tanvi was the fastest. Then we have Shivain, Devanshi, Mukti, Latin, Kuku, Sonal, Namra, Mishika, and Homer. All right. We have question number 8 out of 18. 30 players are playing with us for this question, which is coming on your screen now. थर्टीन पीपल गॉट दिस राइट. सो जो 3 यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी कि जहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी है अलॉन्ग विद द एलजी आर ऑफ कोर्स दिल्ली. देन वी हैव जेएनके एंड लक्षद्वीप. एंड द राइट आंसर बिकॉज ऑफ दैट इज लद्दाख, क्योंकि आपको बताना था कहाँ पे नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, सो लद्दाख में नहीं है. लद्दाख इज जस्ट अ यूनियन टेरिटरी, डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली. Okay, 5 people on the leaderboard got this right. Kuku was the fastest, climbing spots very fast. Tanvi has taken a considerable lead now. Then we have Shivain, Mukti, Kuku, Devanshi's Latin, Namra, Homer, Sonal, and Mishika. All right. काफी intense competition है आज. 30 players going for the 9th question. We are halfway into our quiz. This question is coming up for you now. ये तो बहुत डायरेक्ट, ये तो क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन हो गया. आई शुड हैव मेड दिस बेटर. दिस वाज एन ओवरसाइट, बट बहुत सिंपल हो गया. ये अगर किसी का गलत हो गया ना, मारूंगा मैं. यार हद करते हो भाई, कैसे गलत कर सकते हो ये क्वेश्चन. 3 कंट्रीज के नाम लिखे हुए, तो इंडिया कौन सी कंट्री बनेगी? चौथी बनेगी ना. मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता. India has become the 4th economy to surpass $700 billion, joining China, Japan and Switzerland. तो 3 को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आप चौथे होगे ना ज्वाइन करने वाले. हाउ कैन यू पॉसिबली गेट दिस रॉन्ग? मतलब मुझे लग रहा था मैंने बेवकूफ़ी कर दी इतना सिंपल क्वेश्चन बना के, बट यू गाइज जस्ट आर ऑन नेक्स्ट लेवल. क्या बात है. सलाम है उन लोगों को जिसने इनको गलत कर दिया. Come on, guys. You just surprise me. Shivain was the fastest. Then we have Tanvi on top. Then we have Shivain, Mukti, Kuku's Latin, Devanshi, Mishika, Namr, Steph, and Homer on the leaderboard. 10th question for 30 players. Let's go for it. In 3, 2, 1. ये थोड़ा स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है. स्टैटिक बेस्ड भी नहीं बोलूंगा, बैकग्राउंड बेस्ड बोलूंगा. कॉन्टेक्स्ट बेस्ड. हरियाणा वॉज द रॉन्ग गेस. जस्ट बिकॉज इतने सारे एथलीट्स हरियाणा से, इसका मतलब ये नहीं कि सारे एथलीट्स हरियाणा से. दीपा कर्माकर हेल्स फ्रॉम त्रिपुरा. ठीक है. शी वॉज जिमनास्ट. शी केम 4th इन वन ऑफ द रिसेंट ओलंपिक्स, नॉट दिस वन, उससे पिछला वाला. एंड शी रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट. All right, let's see who all got this. Shivain got this, Mukti's Latin, Steph, and Riddhi got this. Okay. Shivain was the fastest. Then we still maintaining the first position. Then we have Shivain, Mukti's Latin, Kuku, Steph. Riddhi is back on the leaderboard after a few questions. Devanshi, Mishika, and Namra. Okay, so let's go to question number 11 out of 18. We have 31 players playing with us now.
Let's go for it in three, two, one. Also discuss this in the class. I'm expecting most of you to get this right. Please don't disappoint me. 8:1 इज द करेक्ट आंसर। 9 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी जिन्होंने डिसाइड किया कि स्टेट्स भी टैक्स कर सकते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस को। इतना डिटेल में पढ़ाया था मैंने आपको ये कि कौन सी लिस्ट में आता है, क्या क्या इंटरसेक्शन है, कौन सा एक्ट है, किसने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया, सारा कुछ बताया था क्लास में। यू गाइस शुड स्टार्ट टेकिंग नोट्स। 8:1 इज द करेक्ट वर्डिक्ट रेशियो फॉर दिस पर्टिकुलर जजमेंट। Shivane's Latin, Steph, Riddhi, and Sonal got this right on the leaderboard. Riddhi got it the fastest. Shivane has displaced Tanvi now for the first position. Tanvi is on second. Then we have Zlatan, Mukti, Steph, Kuku, Riddhi, Mishika, Sonal, and Devanshi. All right, let's go to question number 12 with 31 players. Let's go for the next question in 3, 2, 1. Also legal GK based, also something which we have covered in the class. I remember I have told this to you. Justice Pardiwala is the correct answer. Justice Sundresh, Justice Mishra, and Justice Suryakant, along with Justice DYC, gave an opinion in favor of the Citizenship Act, whereas the dissent was given by Justice Pardiwala. 4:1 was the ratio, where the constitutionality of Citizenship Act Section A was upheld. All right. In relation with the Assam Accord. Assam Accord was signed in 1985. Riddhi was the fastest for this one. Shivane and Tanvi are neck to neck for the first and second positions. Then we have Mukti, Zlatan, Steph, Riddhi, Kuku, Mishika, Devanshi, and Sonal. All right, let's go to question number 13 with 31 players with us. Let's go for it in 3, 2, 1. 2035 is the correct answer. 2035 तक हमारा प्लान है to have our own space station like the ISS. भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन उसका नाम रहेगा. This was announced recently by our Union Minister, Dr. Jitendra Singh. Correct. Okay, I can see a new name called Lax on the leaderboard. Steph was the fastest for this one. Steph, I think, is Ashim. Then we have Shivain, Tanvi, Mukti, Ashim, Riddhi, Kuku, Zlatan, Mishika, Devanshi, and Lax on the leaderboard. All right, let's go to question number 14 without any further ado. Coming up for you in 3, 2, 1. मेजोरिटी ऑफ यू गॉट दिस राइट। इसराइल की पार्लियामेंट का नाम आपको मुझे बताना था, विच इज कॉल्ड द नेसेट। मजलिस ईरान की पार्लियामेंट को कहते हैं, एंड और भी काफ़ी सारी अरेबियन कंट्रीज की पार्लियामेंट का नाम मजलिस रिलेटेड है, बट प्राइमरली ईरान। कांग्रेसो इज आई थिंक इंडोनेशिया, एंड डाइट मैं भूल गया कौन सी है, सो आप लोग चेक कर लेना। बट नेसेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसराइल हैज बीन इन न्यूज, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। Shivane and Riddhi did not get this right. Okay, that's surprising. Tanvi had the fastest response. Then we have Shivane, Mukti, Steph, Kuku, Latin, Riddhi, Mishika, Homer, and Sonal on the leaderboard. Wonderful, well played, guys. 32 players for the 15th question. Let's go for it in 3, 2, 1. अभी हम इस बारे में बात कर रहे थे
कि गलवान वैली skirmish which happened in 2020, उससे पहले डोकलाम में भी एक स्टैंड ऑफ हुआ था in 2017. Doklam was the tri junction between. Oh, only 10 people got this right. It's India, China, and Bhutan. ठीक है, इन तीन कंट्रीज का ट्राई जंक्शन है डोकलाम. तिब्बत थोड़ा इस साइड है, भूटान की साइड पे है डोकलाम. इट्स नॉट बांग्लादेश, नॉट म्यांमार, नॉट तिब्बत, इट्स भूटान. ठीक है. Riddhi was the fastest for this one. Tanvi, Shivain, Mukti, Ashim, Kuku's Latin, Riddhi with the fastest response. Mishika and Vihan is now on the leaderboard, and Homer is on the leaderboard. All right, we are moving towards the final segment of our quiz, the last three questions. 16th question coming up for you all in 3, 2, 1. Let's go for it. द करेक्ट आंसर इज भूटान. हम यूपीआई ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं. अगर हम पीयर टू पीयर लेंडिंग की बात करते हैं तो सही आंसर होता सिंगापुर. बट द फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू अडॉप्ट यूपीआई ट्रांजैक्शंस वाज भूटान. ठीक है. रिसेंटली मालदीव्स आल्सो अडॉप्टेड इट. Sonal was the fastest for this one. Tanvi, Mukti, Shivain, Zlatan, Ashim, Kuku, Riddhi, Mishika, Sonal, and Vihan. On the leaderboard, the second last question of the day, 32 players ready to play, 33 players with us. The question coming up now. द करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी. महात्मा गांधी ने नहीं जीता है नोबेल पीस प्राइज, ऑल्दो ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर इट 5 times, but he still did not win the Nobel Peace Prize. Kailash Satyarthi has won it. 14th Dalai Lama, which is the current Dalai Lama, has also won it. Mother Teresa has also won it. So the right answer becomes Mahatma Gandhi. Okay. Let's see the leaderboard. Tanvi with the fastest response. Then we have Mukti, Shivain, Zlatan, Kuku, Steph, Riddhi, Nishika, Watson is now on the leaderboard, and Sodal. All right, that brings us to the last question of the day. 33 players playing with us for the final question coming up on your screen in 3, 2, 1. This is a simple question. Also discussed in class, by the way. Bacterial infection is the correct answer. WHO recently declared India to be trachoma free. Trachoma is a disease which primarily affects your eyes. And let's see who's the winner of today's Menti quiz. I think it's gonna be Tanvi. Yes, absolutely. With a phenomenal performance, Tanvi has won this quiz. Let's all congratulate her for the wonderful performance, and also very well played Mukti, Shivain, Steph, Zlatan, Riddhi, Kuku, Mishika, Sonal, Vihan, and everyone who made appearances on the leaderboard and everyone who participated. You all played really well because I saw that most of the questions were answered correctly by a lot of people. So leaderboard does not matter. What matters is एटलीस्ट 18 में से अगर 10-11 क्वेश्चन से ज्यादा सही कर रहे हैं, दैट मींस यू आर ऑन द राइट ट्रैक. यू आर डूइंग एक्सेप्शनली अगर आप 14-15 से ज्यादा सही कर पाए. अगर आप 10 से कम स्कोर कर रहे हो तो यू नीड टू पुट इन मोर एफर्ट्स. एंड अगर आप 6-7 से कम स्कोर कर रहे हो तो यू जस्ट नीड टू put all your emphasis on GK now. So make yourself accustomed to GK accordingly, whichever your score is. Arman is saying Namra was me. Okay, Arman backwards. Okay, ठीक है, well played.
Yes, Mishika is saying he was nominated 5 times but never won. That's correct. बट वेल प्लेड ऑल ऑफ यू. कैसा था आज का क्विज? हाँ, डाइट आई थिंक मुझे भी लगता है जापान है. हाउ वाज टुडेस क्विज? डिड यू एंजॉय इट? Anya Forger is saying hello, Govind bhai. Hello to you too. Prapti saying, are we really supposed to know the ratios of judgment for the most important ones जो काफी लैंडमार्क हैं? I would suggest कि हाँ, क्योंकि A-Lit में कई बार पूछे गए हैं, A-Lit में 2-3 बार पूछे गए हैं ratios. So from that perspective, I would ask you to learn कि ratios आप जो मेजर 10-12 जजमेंट ही हैं साल भर में जो इस तरीके के इंपॉर्टेंट हैं, उनके ratios और उनके डिसेंटिंग जजेस और उनसे रिलेटेड जो लॉज हैं, जैसे सिटीजनशिप एक्ट हो गया, असम एकॉर्ड हो गया, है ना, वो सब आप पढ़ लो तो दैट वुड बी बेटर. Baki, I hope you guys enjoyed the quiz today. We'll have the next Menti quiz, which would be a paragraph-based quiz on Friday, which would be along with the Hindu analysis, 3 to 4 paragraphs and 13, 14, 15 questions based on those. Mishika Singh, can we get a list of important judgments this year? I'll talk to Swasni ma'am about this once because she takes care of legal. It's her area of expertise, but I'll see. I'll see if we can do that. I'll try. ठीक है, चलो. That's all for today, guys. I hope you had fun in this session. We'll meet tomorrow with our Hindu analysis as usual. Please make sure you come to that, and please make sure that you join today's last lab session of legal as well by Swasti ma'am at 8 p.m. And most likely आज आपकी next Know Your NLU series की वीडियो भी लाइव हो जाएगी, which would be covering NLS Bangalore. So stay tuned for that as well. Give your likes, shares, subscribes, and a lot of love to that video as well, like you gave to the Nalsar one. And I'll see you tomorrow again at 3 p.m. same time. Till then, keep learning, keep preparing. Signing off. Bye bye. कोई बात नहीं रिद्धि, दैट हैपेंस, दैट्स ओके, एज लॉन्ग एज यू न्यू द आंसर. दैट डज नॉट मैटर कि आपने मिस क्लिक कर दिए 2-4. दैट्स ओके. चलो, एंडिंग द सेशन गाइस. बाय बाय. सी यू टुमारो.